Before reaching the amount, right now, before reaching the amount, that an employer has to pay to the employees, before reaching the amount that an employer is supposed to pay to the employees, the payroll process needs planning. The payroll process needs planning. This covers the majority part of payroll process. This covers the majority part of payroll process. The various, hello, Sachin, any doubt? Maturity part of the Maturity नहीं, majority, माने major part, majority part of the payroll process. Sorry. The various pre-payroll process activities are, the various pre-payroll activities are, the various pre-payroll activities are, point number 1, setting up the salary part, setting up the salary part, second, gathering data of the month that will be fed as input, gathering data of the month that will be fed as input, gathering data of the month that will be fed as input. क्या इनपुट हो सकता है बताइए, एम्प्लॉयज से रिलेटेड क्या इनपुट हो सकता है जो पेरोल प्रोसेस में फीड किया जाना चाहिए? फॉर एग्जांपल, उसका लीव कितना है, उसका अटेंडेंस कितना है, उसका टैक्स का कैलकुलेशन कितना है, शिफ्ट वाइज कोई अलाउंस मिलना है, उसकी इंसेंटिव कितनी है, कोई लोन लिया है तो उसका अकाउंट, समझ में आ रही है बात? यस सर। राइट इट डाउन, मतलब उसको ब्रैकेट में करके एग्जांपल के तरीके से लिख लो, लीव, अटेंडेंस, शिफ्ट वाइज अलाउंस एक्सेट्रा. लीव, अटेंडेंस, शिफ्ट वाइज allowance, etc. Next, taking into account statutory compliances, taking into account statutory compliances, comma, company's policy, comma, law and regulation, comma, law and regulation. Law and regulation. Next point, validating the information. जो डेटा आप फीड कर रहे हैं उसको वैलिडेट करना जरूरी होता है कि वो सही है कि नहीं. वैलिडेटिंग द इंफॉर्मेशन, उसको भी ब्रैकेट में लिख लीजिए. वैलिडेट करने का एक प्राइमरी पर्पस ये भी होता है टू अवॉइड एनी रिपीटिशंस और ओमिशंस. राइट डाउन, टू अवॉइड एनी रिपीटिशन और ओमिशन. To avoid any repetition or omission. Done. This was all about the pre-payroll process. Now you write payroll process. Next step, payroll process.
payroll process. This is the stage where actual work towards salary calculation is done. This is the stage where actual work towards salary calculation is done. This follows the pre-payroll process. This follows the pre-payroll process. This follows the pre-payroll process. Next, you write. Once the verified data is fed in the system, once the verified data is fed in the system, once the verified data is fed in the system, the net pay is obtained after the adjustments of Once the verified data is fed in the system, the net pay is obtained after the adjustments of necessary taxes and deductions. Necessary taxes and deductions. Necessary taxes and deductions. ठीक है, पेरोल प्रोसेस क्या होता है? ये मेन काम होता है पेरोल का, जिसमें आपकी सैलरी कैलकुलेशन होती है, दे अराइव एट योर नेट सैलरी और योर टेक होम और योर इन हैंड सैलरी. ओके, कैलकुलेशन होता है, सॉफ्टवेयर होता है, उसमें सब कुछ फीड किया रहता है, और फिर जब आप डेटा फीड करते हैं तो उसमें कैलकुलेशंस अकॉर्डिंगली होती है. इसीलिए पेरोल सॉफ्टवेयर इतना महंगा आता है. आप समझ सकते हैं कि कितना हाई लेवल ऑटोमेटेड होता है ये. ओके, नेक्स्ट यू राइट पोस्ट पेरोल प्रोसेस. Post payroll process. An employer also has the work of carrying out the post payroll process. An employer also has the work of carrying out the post payroll process. The following the activities are, मतलब जो post payroll की activities हैं, they are, लिखिए, the activities are, bullet points में लिखते जाइए. पहला लिखिए, review, generating and issue of pay slips. Review, generating and issue of pay slips. Next, TDS report. TDS, T for tiger, D for dog, S for sheep. TDS report. TDS क्या होता है? किसी को आइडिया? TDS is tax deducted at source. सोर्स पे ही जो पैसा कट के आपका टैक्स कट के आपके हाथ में आता है, इसी को कहते हैं TDS. Write down. TDS report, cash report. Cash report. Next, producing employee information. Producing employee information like CTC,
comma, gross and net pay, like CTC, comma, gross and net pay, comma, bonus, comma, loss of pay, comma, commissions. Commissions. Next point लिखिए. Statutory compliances. Statutory compliances like PF and ESI, and remitting the amount remitting remitting the amount to respective government agencies. Remitting the amount to respective government agencies. Next point. Next point. Keeping record for the purpose of payroll accounting, because salary is a significant operating cost. Because salary is a significant operating cost which has to be mentioned in the books of accounts. Okay. Next लिखिए payout. Normally salaries are provided by the employer. Normally salaries are provided by the employer in cash or bank account. Sorry, in cash, check and bank account. In cash, check and bank account. Okay. So the employer has to ensure that the company's bank account has sufficient fund to make salary payment upon direction. Last step, you write reporting. Last is reporting. Write down. Since salary report banana. Reporting. Okay. देखिए. Since salary is a major cost to the company,
So accurate information in the report. Since salary is a major cost to the company, so accurate information in the report, such as department or location-wise employee cost, has to be mentioned. मैम लोकेशन वाइज के बाद क्या बनेगा? Location-wise employee cost has to be mentioned. This report is further analyzed to know the overall health of the organization. The report is further analyzed to know the overall health of the organization. With this, we complete the payroll process. Okay. Advantages और disadvantages आपने खुद कल क्लास में डिस्कस किया है. You remember? So you just write down. Bullet points में लिखिएगा. Explanation आप खुद से देंगे उसका. Write down. Advantages. उसका bullet points लिखिए. Advantages. First लिखिए. क्या बताया था कल आपने क्लास में? cost efficient, Cost efficient. और क्या बताया था? accuracy, Good. और क्या बताया था? time efficient, employee satisfaction, Employee satisfaction. और बहुत सारी other. हाँ, avoiding rework, हाँ. और record of लिखिए. employee details, Very good. और बहुत सारी. providing additional data and analysis. Very good. और भी चीजें हैं जैसे कि पेरोल को अगर टाइम शीट स्प्रेडशीट से जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है कि उसमें जितना अटेंडेंस वगैरह बनता है एम्प्लॉइज का वो डायरेक्टली पेरोल में चला जाता है, उसका रिकॉर्डिंग अलग से नहीं करना होता है. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पेरोल अब जो और रिवाइज्ड और अच्छे सॉफ्टवेयर के साथ आ रहा है. तो पेरोल इसीलिए वो सॉफ्टवेयर महंगे होते हैं, उसमें बहुत सारी मल्टीपल और एक्टिविटीज एचआर की भरी होती है. ठीक है, चलिए लिखिए ये सारी चीजें लिखिए. आप लिखिए पॉइंट नंबर 1 एक्यूरेसी. बुलेट पॉइंट्स में लिखते जाइए, डिटेल आप खुद लिखेंगे अपने लैंग्वेज में. एक्यूरेसी. नेक्स्ट स्पीड. थर्ड कॉस्ट एफिशिएंट. फोर्थ अवॉइडिंग रीवर्क. Employee data records. Next, also provides additional data and analysis. To make useful to your business, to make it useful to your business. ठीक है. Storing personal record. लिख चुके हैं क्या? Storing personal record.
पर्सनल Employee रिकॉर्ड, details में वही आ रहा है। हाँ भाई सुनो, पर्सनल और पर्सनल में डिफरेंस होता है ना। पर्सनल मतलब व्यक्तिगत और पर्सनल मतलब रिलेटेड टू पीपल। इसलिए जब एचआर का टर्म्स लिखोगे तो पर्सनल मैनेजमेंट नहीं होता है। पर्सनल रिकॉर्ड यानी PERSONNEL, पर्सनल रिकॉर्ड। नेक्स्ट, टू फोरकास्ट फ्यूचर कॉस्ट, स्टाफ प्लान, budget, etc. To forecast future cost, staff plan, budget, etc. ओके, डिसएडवांटेज लिखिए। Number 1, threat of data security and loss. Threat of data security and loss. Threat of data security and loss, comma, fraud. Second, threat of being accessed by unauthenticated users. Threat of being accessed by unauthenticated users. Next, expensive. Next, expensive. Next, infrastructure requirement. Infrastructure requirement. ब्रैकेट में डालिए skilled manpower. Skilled manpower. Computer equipment, etc. Okay. So with this, we are done with your payroll syllabus. Okay.